Howdy everyone, this is Astha Joshi and you're watching Learning Never Stops. And before we proceed, let me give a big shout out to Aditi Sharma. Aditi. Okay, today we're going to learn Yaram from the movie Ethi Dayan. Oh god. I have no one else but Shraddha to thank for this song, because she's the one. You guys say that I have amazing music taste. Guys, it's you people have amazing music taste, and you are incredible enough and kind enough to share your music interest with me, and hence we make this possible together. Okay, so thank you Shraddha for bringing this song as a request to me. I loved doing it. I'm really sorry for this major delay that was caused. I figured out the chords like this, but then the strumming pattern took quite some time. I would go to this song, but then I would bounce back to some other. Then again I would go back, I would bounce back to something other. Then I would again go back and I would bounce, and this was key, this was just happening. But I finally did it. Okay, so let's start. These are the only chords we have in this song. I called these chords ka set as the brothers and sisters chord, as bhai behan chord, because they're just so interlinked and so together. They just form, they're so connected. Okay, look alike, huh? So that's why I call them brothers and sisters chord. So we're going to use them, just them. The strumming pattern, there are 3 strumming pattern, बहुत easy हैं. आप इसको island strum पे भी बजा सकते हो पूरे के पूरे गाने को. So do not worry, I'm going to give you all the variations, so do not worry about that. If you already know the chords, then skip, otherwise here we go. Okay, 1, 2, 3, first chord we have here is A minor, which is the 4th string of the 2nd fret. Then we have F. Don't lose your A minor, just take your index finger and put it on the 2nd string of your 1st fret. That makes F. Now don't lose your F. To make D minor, just take your middle finger and put it right behind your middle finger जो आपने इधर रखी है, so उसके पीछे रख दो, and it becomes D minor. So this is 3rd string of the 2nd fret. These are the 3 brothers and sisters. Alright, now let's quickly start with the song. I will keep on telling you the strumming pattern along with it. Okay, let's start with the song. We're going to start with the first 2 lines. They go exactly the same. हम लोग use करेंगे A minor और F. A minor or F. Now इसके लिए हम लोग use करेंगे अपना thumb. I will go down and tap, down and tap. You can play it on island as well. वो मैं बताऊंगी इसके बाद. Okay, so शुरू करते हैं A minor and F. Remember, हम चीज़ हैं भरे काम की यारम, हमें काम पे रख लो कभी यारम. If you want to do it on island, हम चीज़ हैं बड़े काम की यारम, हमें काम पे रख लो कभी यारम. Okay, good job. Now let's go to the next part of the song, which is here in this part I switch my strumming to down, down, up, 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 down, up, down, up. So I go like this, and here we are using A minor and D minor, no F. Okay, in this part we use A minor and D minor. So I'm going to do this part. Chords will flash. Try and do it together. Okay, सूरज से पहले जगाएंगे अखबार की सब सुर्खियाँ हम गुनगुनाएंगे, पेश करेंगे गरम चाहे फिर कोई खबर आए ना पसंद तो एंड बदल देंगे. Okay, now you can do this part on down, tap as well, and on island as well. So सूरज से पहले जगाएंगे अखबार की सब सुर्खियाँ हम गुनगुनाएंगे. Okay, like this. Or if you want to do it on island, सूरज से पहले जगाएंगे अखबार की सब सुर्खियाँ हम गुनगुनाएंगे. Okay, and you carry on. Alright, easy, very, very easy. Let's quickly move to the next part of the song. Now here we're going to use
all the three chords, okay? A minor B, F B or D minor B. Try and note it down, that will be great. It will stay with you forever, okay? So let's start. I'm going to look at my notes. I'm continuing with the same strumming pattern. कोई खबर आए ना पसंद तो एंड बदल देंगे, मुँह खुली जमाई पर हम बजाएं चुटकियाँ, धूप ना लगे तुम्हें खोल देंगे खिड़कियाँ, पीछे पीछे दिन भर घर दफ्तर में लेके चलेंगे हम. So what we are doing? मुँह खुली जमाई पे हम बजाएं चुटकियाँ या जैसे वो लास्ट पार्ट थोड़ा सा ऊपर को जाता है, हम लोग डी माइनर ऐड कर देंगे. ओके, दैट्स हाउ इट गोज. सो ऑल द थ्री कॉर्ड्स आर बीइंग यूज्ड इन दिस पैराग्राफ. ओके, एक बार साथ में बजाते हैं. फ्रॉम द टॉप सूरज से पहले जगाएंगे. हो सूरज से पहले जगाएंगे, अखबार की सब सुर्खियाँ हम गुनगुनाएंगे, पेश करेंगे गरम चाय कोई खबर आए ना पसंद तो एंड बदल देंगे, मुँह खुली जमाई पे हम बजाएं चुटकियाँ, धूप ना लगे तुम्हें खोल देंगे छतरियाँ, पीछे पीछे दिन भर घर दफ्तर में लेके चलेंगे हम. Then comes the last part of the song, as in मतलब मैं इसमें लास्ट ही कर रही हूँ उसको. So I go dum 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 dum, normal down strums. Okay? So तुम्हारी फाइलें A minor पर and then F, तुम्हारी डायरी गाड़ी की चाबियाँ, and then opposite. Okay, तुम्हारी ऐनकें, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारी कैब फोन, अब डी माइनर, तुम्हारी कैब फोन और अपना दिल ए माइनर पे, एंड देन डाउन अप. ओके, सो लेट्स डू इट टुगेदर. पीछे पीछे दिन भर घर दफ्तर में लेके चलेंगे हम, तुम्हारी फाइलें, तुम्हारी डायरी, तुम्हारी गाड़ी की चाबियाँ, तुम्हारी ऐनकें, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा कैब फोन और अपना दिल, तुम्हारा दिल प्यार में हारा, बेचारा दिल और अपना दिल प्यार में हारा, बेचारा बेचारा दिल. We go D minor, F, A minor. You can also do this part on island strum, like, you know, na 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 na. ठीक है, so you can also do it on island. There's no problem. You can do this whole song on island. You can do the whole song on down tap, or you can bring in some variation like I did. I think that just brought that just because this song is इस सॉन्ग में पढ़ते हैं, you know, खुद इस सॉन्ग में पढ़ते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं स्ट्रमिंग में भी थोड़ा सा वो फोल्ड्स ले आती हूँ. बट इट इज़ एब्सोल्युटली ऑन यू. इफ़ यू आर अ बिगनर, आप अगर आइलैंड में अभी थोड़े से कंफर्टेबल हैं, उससे बाहर अभी नहीं जाना चाहते हैं, देन यू कैन डू इट ऑन आइलैंड. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, खलास डन. द मेन पार्ट गोज एग्जैक्टली द सेम. इसके बाद वाला पैराग्राफ सेम कॉर्ड, तीनों के तीनों भाई बहन बजते रहेंगे और या गाना चलता रहेगा. Okay, so that's all for this video today. I will see you next time. Until then, adios amigos and amigas. I love you guys.